శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, ఆపద్ముక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద, లక్ష్మీ వల్లభ గోవింద, రాధారమణ గోవింద, రాధాకృష్ణ గోవింద, శ్రీరామకృష్ణ గోవింద 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 గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మణి అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం
శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ சப்தகிரிவாச வேங்கடவனே கோவிந்த கோவிந்த. ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம். தெழி குரல் அருவி திருவேங்கடத்து எழில்கொள் சோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே என்கிறார் நம்மாழ்வார். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி அருணா. இதோ பகவானை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கேசத்திலிருந்து பாதம் வரை, அதாவது திருவடி வரை. சுந்தர மோகனாங்கம் ஸ்ரீபூமிகாம் தமரவிந்ததலாயதாக்ஷம் பிராணப்பிரியா பரம பங்கஜ கம்புகண்டம் பிரம்மேஷ வந்தியவரதம் அமிர்தம் பஜாமி. புருக்வத்ரிகஸ்ய மமரீஜ மத்தியே ஸ்தித்வாசனே குசமயே சமுதீரயந்தம் ஸ்ரீசாஸ்திரசாரமகிலம் விகணோ முனீந்திரம் பூஜோ நமாமி புவனைககுரம் பிரசன்னம். ஸ்ரீமதே விகணசே நமः. भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यद्वृतवक्त्राद्या पारिषद्या परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. श्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तरीकृतं सूत्रं वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीत भगवतानध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुमन्यतां प्राणनायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रिकपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि स्तण्डिरप्रतिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यङ्कर्मकरिच्यन्नादो निर्विघ्नेन परसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यङ्कर्मणीतरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासुतप्तशितमानशे सुतरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये कृणोमि तत्तागं सुचिरगं सुधर्मा. इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ये देशं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमरुतस्वस्त्या. अस्मिन् कुम्भे मों वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि सप्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. इदमासनं वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. प्रजेतसे नमः. रक्ताम्बरधराय नमः. यादस्पतये नमः. पुष्पाणि समर्पयामि. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सपुष्पप्रवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामगमर्चयेत्. आग्नेयोगस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्वं हितो न शम्भो. वैराजन्ते तु हदन्यसत्तां प्रणीष्याम देशो विपधानामनादर्यामे सस्तान्तनितान्तधात्. पद्माकारमण्डले मुम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि. शान्तमावाहयामि. हरमावाहयामि. अमितमावाहयामि. नित्यानुभागिनमावाहयामि. तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि. वामे जगामावाहयामि. सूत्रपति जगासमेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम्. विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि. गुडोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परशमाप्तिज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनम्. भवद्भिर्नज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि. कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापति प्रगिदां प्रगिदां प्रजापतिः. शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओम अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः
इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातनं तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसुस्तुरस्य द्रविणोदा सदरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वेदपते मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाति पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नमदोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्ते अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवीमसृतः समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्त्यै तथातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यमतमोरसस्तस्य भादिगते हनः उशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनमोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीप्यते अग्ने कृत्वा क्रतु गुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै वक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तः सदमार्त्येष वयक्तुस्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणिनी शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पयसापयोभिः प्रतापरी जिज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संभृतगुं रसं सर्वगुं सर्पूतमस्यादि सुदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सत्पिर्मधूरगं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं पावमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सह मा पुनात् सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवरुणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्त्यगिन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये नैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सुञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओं प्रात्यान्तिषि देवार्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहा पशवो मार्जयन्ताम् उदेत्यान्तिस्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जयन्ताम् वतोधराधैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः समक्रतुम्बस्य दिवेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः
सप्त इमे लोका ये चितरन्ति प्राणाकुहाशया अन्निहिता सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्रक्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாசனத்தை தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே நீர் சேர்த்து அக்ஷதைகளால் புஷ்பங்களாலும் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரங்களிலே அனைத்து அவதாரங்களும் சிறப்பானவை. அதிலே ராமாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது என்றும் கிருஷ்ணாவதார லீலைகளை சேவிப்போம். இன்று வைகாசி மாதம் 6வது நாள் புதன்கிழமை, சதுர்த்தி திதி. இப்படி விசேஷமான இந்த புதன்கிழமை நாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார். ஆயர்பாடி லீலைகள் எப்படி என்றால், எம்பெருமான் கண்ணனாக ஆயர்பாடியில் அவதரித்தான். சிறையில் வசுதேவர் தேவகி மகனாக அவதரித்தவன் அந்த இரவே வசுதேவரால் ஆயர்பாடிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு தந்த நந்தகோபன் யசோதை மகனாக வளர்ந்தான். அவ்வாறு வருகையில் நதி அவர்களுக்கு வழிவிட்டது. குழந்தை கண்ணன் பூத்தனையின் நஞ்சுப்பாலை குடித்தது. சகட்டமாகவும் விழாமரமாகவும் மருத மரங்களாக வந்து அசுரர்களை ஒழித்தது. காளியன் மடுவிலே நாகத்தை அடக்கி அதன் மீது நர்த்தனம் ஆடியது. ஆய்ச்சியர்களை வம்பிழுத்தது. வெண்ணெய் திருடி உடைத்தது. திருடி உண்டால் அடியுண்டு உரலில் கட்டுப்பெற்றது. குவலாய பீடம் யானைகளையும் प्रतिशरबंधन देवताराधनं करिष्ये ओम यमर्पयन्ति मणयो हविर्योजो हि दानरविबुधा विराजन्ने तम्बयदोया यस्याननाग्निं विपणानि वदन्ति ओम शेषमावाहयामि सहस्रदीर्घमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि तक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदीतिरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरोदधादन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तये वायमप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं धासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति मन्धामनोजनेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधदाग्नादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसन् देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं सबत्सु बृहत्यशो नावामिवारोहेम अम्भोमुजामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यं प्रियादवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभगुं शुभाम् ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். கிருஷ்ணனின் லீலைகளை தெரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தையும் சேவிக்கலாம். பகவானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் ரக்ஷைகளை அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அப்படி ஆய்ச்சியர்களை வம்பிழுத்தது. வெண்ணெய் திருடி உண்டதால் அடியுண்டு உரலில் கட்டுப்பெற்றது. குவலாய பீடம் யானையையும் கம்சனையும் அழித்தது. இன்னும் எண்ணற்ற லீலைகளையும் செய்த கண்ணன் பாண்டவர்களுக்காக துரியோதனனிடம் தூது சென்றது. பாரத போர் நடத்தியது. அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக இருந்தது. ஜெயத்ரதனை அழிக்க சூரியனை மறைத்தது என சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அப்படி
அனைவரையும் சிலரை சம்ஹரித்தான், சிலரை ரட்சித்தான். அப்படி ரட்சிக்கும் பரந்தாமனுக்கு இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். இந்த லீலைகள் யாவும் மிகவும் பிரசித்தம் என்பதாலும் அநேகர் இவைகளை பாகவதத்தை படித்தும் உபன்யாசங்களை கேட்டும் தெரிந்து கொள்ளுகிறார்கள். அப்படி அந்த என்னென்ன செய்தார் என்று பார்க்கும் பொழுது மருத மரங்களை முறித்தது முதல். குபேரனின் புத்திரர்களாக நளகூபரன், மணிகிரீவர் என்ற இருவரும் பல அப்சரஸ் பெண்களுடன் அடையில்லாமல் நீராடிக் கொண்டிருக்கையில் நாரத முனிவர் அங்கு எழுந்தருள அங்குள்ள பெண்கள் அனைவரும் நாணம் கொண்டு ஆடையை உடுத்திக்கொண்டு அங்கிருந்து விலகி சென்றனராம். ஆனால் இருவர் மட்டும் ஆடையில்லாமல் நின்று கொண்டிருக்க மதுபான மயக்கத்தால் அதனால் கோபமடைந்த நாரதர் அவர்களை மரங்கள் போல் நிற்கின்ற நீங்கள் மரங்களாகவே ஆவீர்கள் என்று சபித்தாராம். அந்த இருவரும் தவறை உணர்ந்து பரிகாரம் கேட்க நெடுங்காலம் சென்ற பின் திருமால் கண்ணனாக அவதரிக்கும் பொழுது நீங்கள் சாப விமோசனம் பெறுவீர்கள் என்று கூறி சென்று விட்டாராம். 2 மருத மரங்களாக இருந்த இவர்களே கண்ணனால் முறிக்கப்பட்டு சாப விமோசனம் பெற்று மேலுலகம் சென்றனராம். கண்ணனை கொல்வதற்காக கம்சனால் ஏவப்பட்ட 2 அசுரர்கள் இந்த 2 மருத மரங்களில் ஆவேசித்திருந்தனர் என்றும் கண்ணன் அவர்களை அழித்தான் என்றும் சில புராணங்கள் கூறுகின்றன. பெரியாழ்வார் முதல் பத்திலே ஒருங்கொத்த வினை மருத முன்னிய வந்தவரை என்றும் 3ஆம் பத்தில் பொய்மையான மருதான அசுரரை என்று அருளிச் செய்கிறார். அப்படி அந்த பகவான் அனைவரையும் ரட்சிக்கிறான். இதோ அந்த பரமாத்மாவிற்கு ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதேபோல் கூனியின் முதுகை நிமிர்த்தியது. கம்சனை கொல்வதற்கு பலராமனுடன் செல்கையில் கண்ணன் மதுரை ராஜவீதியிலே கம்சனுக்கு கொடுப்பதற்காக சந்தனத்தை கொண்டு வந்த கூனி ஒருத்தியிடம் நல்ல சந்தனம் கொடுக்கும்படி கேட்டானாம். முதலில் மட்டமான சந்தனங்களை அவள் அளிக்க அவற்றை மறுத்த கண்ணன் தனது மேனிக்கு தகுந்த சந்தனத்தை கேட்டானாம். அவளும் இவனின் சீர்மையையும் வடிவழகையும் கண்டு மகிழ்ந்து கம்சனுக்கு தெரிந்தால் தண்டனை கிடைக்குமே என்று அஞ்சாமல் மணமுள்ள சந்தனத்தை கண்ணனுக்கு பக்தியுடன் கொடுத்து பூசும் சாந்து என் நெஞ்சமே என்று நம்மாழ்வார் பாடியது போல் திருவாய்மொழியிலே மகிழ்ந்தாளாம். அவளது பக்தி கண்டு கண்ணன் அவளுடைய கூனல் முதுகை நிமிர்த்தி அவளை சிறந்த பெண் பிள்ளையாக மாற்றியிருந்தானாம். இப்படியெல்லாம் லீலைகள் செய்தவன் அந்த கண்ணபிரான். அங்கே கண்ணபிரானாகவும் துவாபர யுகத்திலே கலியுகத்திலே வேங்கடவனாகவும் எழுந்தள்ளியிருக்கும் அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதேபோல் ஆச்சாரியன் பிள்ளையை மீட்டு குரு தட்சணையாக கொடுத்தது. முனிவர் சாந்தீபினியன் ஆசிரமத்திலே அவரது சீடராக இருந்து கொண்டு கண்ணனும் பலராமனும் வேதங்களும் சாஸ்திரங்களையும் கற்றறிந்தனர். இங்கு தான் சுதாமகன் கண்ணுக்கு நெருங்கிய நண்பனானான். தான் கல்வி கற்று முடிந்ததும் குரு தட்சணைக்காக என்ன வேண்டும் என்று முனிவர் கேட்க அவர் கடலில் மூழ்கி போன தனது பிள்ளையை தனக்கு தட்சிணையாக திருப்பித் தருமாறு கேட்டாராம். கண்ணனும் கடலுக்குள் மூழ்கி பிள்ளையை தேடி எடுத்து வந்து குருவுக்கு கொடுத்தனுப்பினான். இப்படி தோழனான சீமாலிகனை அழித்த கண்ணன் கண்ணபிரானுக்கு நெருங்கிய தோழன் மாலிகன் என்பவன். அவன் கண்ணனிடம் பல ஆயுதங்களை பயின்று கண்ணனின் தோழன் என்ற கர்வத்தால் ஒருவருக்கும் அஞ்சாமல் எல்லோரையும் துன்புறுத்தி கொண்டே இருந்தானாம். எல்லோரும் கண்ணனிடம் முறையிட்டாலும் தனது தோழனாதலால் அவனை தாம் கொல்வது தகாது என்று எண்ணினான். ஒரு நாள் கண்ணன் அவனிடம் இப்படி செய்வது தகாது என்று உபதேசிக்க அவனோ தான் எல்லா ஆயுதங்களையும் கற்றுக்கொண்டாலும்
கண்ணன் சக்கராயுதத்தை கையாளுவதை கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று குறை கூறினான். கண்ணன் சக்கராயுதத்தான் மகிமையை சொல்லி மாலிகனால் அதை கையாள முடியாது என கூறினாலும் மாலிகனின் பிடிவாதத்தால் அதனை அவனிடம் இதுதான் அவனை கொல்ல சமயம் என்று எண்ணி சக்கராயுதத்தை கொடுக்க அவனும் அதை சுழற்றி வீச அந்த சக்கரம் சுழன்று வருவதற்கு இடம் போதாமையால் மாலிகனின் தலையை அறிந்துவிட்டு கண்ணனிடம் சேர்ந்ததாம். தோழமையாக இருப்பினும் அடியவர்க்கு துன்பம் கொடுப்பவரை எம்பெருமான் அழிப்பான் என்பது இதிலிருந்து தெரிகிறது. அப்படி தக்க சமயத்திலே அனைவரையும் ரட்சிக்கும் அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். அக்னியை ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. भूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चक्रमणि औपासनाग्नौ अग्निप्रतिष्ठापनं करिष्ये। ॐ ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा पृथ्वांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरोतिमिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्तिशोम्यः इन्द्रशुद्धो हि नो आर्यं शुद्धो रुद्राणि दाशते शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिदासते मयि देवात्रमणवाजिनतामय्यासिरस्तुमिति देवभूतिः मक्यम जिदंत ममजाने हम यागोति सत्यामन सोमे अस्ते ये नोमानिका आंगतमच्चना हम विश्वे देवासो अधिभोजदामे देवी षडर्वेरणक्रणोत विश्वे देवास यहमीरयत्थं महास्महि प्रजगामातरो भर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतजः सिञ्चतपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमी गर्भाञ्जनगण्योमयो भूः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतसृचो वेन आवः सबुद्धया पुमा अस्य विष्टाशतश्च योनर्चतश्च वः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यं ददात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं विदश्रवणं योदरा च तस्मै ॐ भूस्वममावाहयामि ॐ भुवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि वोगं सवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं ओम प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजुपूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्थः परशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात्मच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मि भेदापो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं नयदाग्रे यज्ञपदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं वृत्रतूर्ये मोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णप्रणीष्यामि गिरमानवाच्यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्णे नमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः सोमाप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्णे नमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणया त्वमप्रणयत समप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सगुं साधयन्तु नः ॐ प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपापोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि उषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिगेरिष्टनरोभामि ब्रह्मणेरिष्टनरोभामि इन्द्रागिरिष्टनरोभामि अग्नयेरिष्टनरोभामि सोमागिरिष्टनरोभामि अग्नयेरिष्टनरोभामि सोमागिरिष्टनरोभामि
अग्निशोमाभ्यां तिष्ठनिर्ववामि प्रजापतये तिष्ठनिर्ववामि ब्रह्मणे तिष्ठनिर्ववामि इन्द्राय तिष्ठनिर्ववामि वसुभ्यो तिष्ठनिर्ववामि मरुद्भ्यो तिष्ठनिर्ववामि रुद्रेभ्यो तिष्ठनिर्ववामि आपवपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे तिष्ठनिर्ववामि बृहत्तये तिष्ठनिर्ववामि मित्राय तिष्ठनिर्ववामि वरुणाय तिष्ठनिर्ववामि आदित्येभ्यो तिष्ठनिर्ववामि अश्विभ्यां तिष्ठनिर्ववामि पूष्णे तिष्ठनिर्ववामि कक्षाय तिष्ठनिर्ववामि कक्षदेवता सोमाय तिष्ठनिर्ववामि औवासनयज्ञाय तिष्ठनिर्ववामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो ज्येष्ठनिर्ववामि सर्वदेवेभ्यो तिष्ठनिर्ववामि आद्यं तृप्यतिस्रयामि इतरं तृप्यतिस्रयामि अग्ने द्योतरसि समितिसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रत्यष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्वादिपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्या अक्षता आज्य चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेगा च शतं च सहस्रं च आयुधं च निगितं च प्रगितं च अर्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्तश्च इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्तु ॐ इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुमेनाय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसत्मने नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुमा ॐ षष्टिशतसहस्रान्यगतमक्षयमर्पदमानय अयन्त यद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्त्वमर्तस्वजेत्तमर्तगिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा ओम वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागो स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यागो स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनमदेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नो आघारान्ते स्वर मंत्र अक्षरक्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थम् तो देवादिषट्मैष्टवहोमं करिष्ये ओम अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनायतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा निदधेवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘ్నసే నమః. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమిత శక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిర్దవర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలపలహితే రమణేక్షుసురాసర్పితక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వే పద్మేభిదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యవారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుష హారీరామృతపత్రాస్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుదామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మ నిచాయేతదక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహిత ధామాతపసంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేరవర్షదహస్రావశానే ఏకైకదలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నో మునీంద్రమదానసారవిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం
అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత వైహానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట ముకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభి శోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వాభావ లావణ్య తేజోరుత్రాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాసవర బ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవత్స్యమన ఆప్నమాన ఔర్వవేదన పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంగల్పతనయాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపర్ణాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకనిషయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సమేతసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యః సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. భగవతే వాసుదేవాయ கோவிந்த கோவிந்த. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க உள்ளோம். மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அதற்கு பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று கிருஷ்ணபிரானை அதாவது கண்ணபிரானை பற்றி தெரிந்து கொண்டிருக்கும் சில தகவல்களிலே அந்த முதலாவது திருமொழியிலே திருகோஷ்டியூரிலே கண்ணனின் திரு அவதாரத்தை பற்றி சற்று பார்க்கலாமா? வண்ண மாடங்கள் சூழ திருக்கோஷ்டியூர் கண்ணன் கேசவன் நம்பி பிறந்தினில் எண்ணெய் சுண்ணம் எதிரெதிர் தூவிவிட கண்ணன் முற்றம் கலந்தனாயிற்றே. ஓடுவார் விழுவார் உகந்தாலிப்பார் நாடுவார் நம்பிரான் எங்குத்தான் என்பார் பாடுவார்களும் பல்பறை கொட்ட நின்று ஆடுவார்களும் ஆயிற்று ஆயப்படியே என்கிறார்கள். அதாவது முதலாவது பத்தில் முதலாவது திருமொழியிலே பெரியாழ்வார் திருமொழியிலே இவ்வாறு அந்த கண்ணனை பற்றி பாடுகிறார்கள். அழகிய மாடங்கள் சூழ்ந்த திருக்கோஷ்டியூர் திவ்ய தேசத்திலே அழகிய கேசத்தை கொண்ட கேசவன் என்னும் திருநாமத்துடன் எழுந்தருளியிருக்கும் எம்பெருமான் திருக்கல்யாண குணங்கள் நிறைந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணராக திருவாய்ப்பாடியில் நந்தகோபருடைய இனிய திருமாளிகையிலே அவதரித்தானாம். அவன் பிறந்ததனால் மிகவும் மகிழ்ச்சி. ஆயர்களும் ஆய்ச்சிகளும் எண்ணெயையும் மஞ்சள் பொடியையும் ஒருவருக்கொருவர் எதிரெதிர் தூவிக்கொள்ள
விசாலமானதும் அழகானதுமான அந்த மாளிகையின் திருமுற்றமானது கண்ணன் முற்றம் என்றால் திருமுற்றமானது. அவர் பிறந்த பொழுதே நந்தகோபர் அவனையே திருமாளிகைக்கு தலைவனாக அபிமானித்ததால் அவ்வாறு பொருள் கூறுகிறார்கள். அந்த எண்ணெயும் மஞ்சளும் பொடியும் சேர்ந்து சேறு நிறைந்ததாகி விட்டதாம். அவனுக்கு தப்பி இங்கு வந்து சேர்ந்த பிறகுதான் அவன் பிறந்ததாக ஆழ்வார்கள் நினைக்கிறார்களாம். கண்ணன் அவதரித்ததால் உண்டான மகிழ்ச்சியால் திருவாய்ப்பாடியில் உள்ளவர்கள் ஓடுவார்கள், சேற்றிலே வழுக்கி விழுவார்கள், மகிழ்ச்சியின் மிகுதியால் கோஷம் எழுப்புவார்கள், பிள்ளையை தேடுவார்கள், தமக்கு உபகாரனான கண்ணன் எங்கேதான் இருக்கின்றான் என்று கேட்பார்கள். பலர் பாடினார்கள், பல வகை வாத்தியங்கள் முழங்க அதற்கு பொருந்தியிருந்து பலர் கூத்தாடினார்கள். இப்படி அந்த ஆயர்பாடியிலே மிகவும் விசேஷமாக கண்ணன் பிறந்த நாளை கொண்டாடி வருகிறார்களாம். பேணிச் சீருடை பிள்ளை பிறந்தினில் காணத்தாம் புகுவார் புக்குமா புக்கு போதுவார் ஆணப்பார் இவன் நெறில்லை காண் திருவோணத்தான் உலகாளும் என்பார்களே. உரியை முற்றத்து உருட்டி நின்றாடுவார், நறுநெய் பால் தயிர் நன்றாக தூவுவார், செரிமென் கூந்தல் அவிழ்த்திழைத்து எங்கும் அறிவிழந்தனர் ஆயர்பாடியரே. கொண்டாளுரி கோலக் கொடுமழு தண்டினர் பரியோலையச் சயனத்தார் விண்ட முல்லை அரும்பன்ன பல்லினர் அண்டர் மிண்டி புகுந்து நெய்யாடினர் என்கிறார். அதாவது திருவாய்ப்பாடியிலே பிறந்த நல்ல குணங்களை உடைய பிள்ளையான கண்ணனை கம்சனின் கண்ணில் படாதபடி காத்து வந்ததனால் பிறக்கும் பொழுது செங்கு சக்கரங்களுடன் தோன்றிய கண்ணனிடம் இந்த ரூபத்தை கம்சன் காணாதபடி மறைத்து கொள்ளும்படி தேவகி பிரார்த்தித்து அவ்வாறே தன்னை மறைத்து கொண்டு திருவாய்ப்பாடி வந்த கண்ணன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். அப்படி ஆயர்கள் அவனை காப்பதற்காக ஆசைப்பட்டு உள்ளே நுழைவாரும் உள்ளே போய் பார்த்துவிட்டு திரும்புவாருமாக இருக்கின்றார்கள். இவர்கள் ஆண் தன்மை கொண்டவர்களில் இவனோடு ஒத்திருப்பவர்கள் யாரும் இல்லை. இவன் திருவோண நட்சத்திரத்திலே அவதரித்த எம்பெருமானுடைய உலகங்களையெல்லாம் ஆளக்கூடியவன் என்று சொல்லுகிறார்களாம். திருவாய்ப்பாடியிலே கண்ணன் பிறந்ததனால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்த இடையர்கள் தாங்கள் சேமித்து வைத்திருந்த தயிர் வெண்ணெய் கொண்ட உரிகளை முற்றத்திலே உருட்டிவிட்டு கூத்தாடுவார்களாம். சிலர் மணம்மிக்க நெய்யையும் பாலையும் தயிரையும் நன்றாக தானம் பண்ணுவார்களாம். மேலும் சிலர் நெருங்கியதும் மென்மையானதுமான மயிர்முடியானது அவிழ்த்து கலையும் படியாக நடனம் ஆடுவார்களாம். இவ்வாறாக ஆயர்பாடி முழுதும் உள்ளவர்கள் தங்களுடைய விவேகம் ஒழிய பெற்றவர்கள் ஆனார்கள். மகிழ்ச்சியில் கண்ணனுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடினார்கள். இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் அந்த மாங்கல்ய தாரணத்தை. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि सुभगे साजीव शरदशतम्. श्रीदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्तस्सु मुहूर्तो अस्तु. प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री. भूदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्तस्सु मुहूर्तो अस्तु. అన్యోన్యము చూడరే ఓ కరి కోకరి
అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అగ్నిదేత ప్రథమో దేవతానాకం సోస్య ప్రజామంత్యమృత్యపాశాత్ తదయుగం రాజావరణో నమన్యతాం కిదేయుక్త స్త్రీ పౌత్రం మకన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వరణశ్రుతి హవత్యాచ ప్రజా స్వామవస్రాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మంతమాన సదాజాస్తే గితమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరణే హవోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా త్వన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో మయా సతీష్ఠాః యజిష్టో బంధినమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం స ప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే భమో భవతి నేతిష్టో అస్యాపుషతో వ్యష్ట అవయక్ష్మణో వరణకం మృడానో వేహిమృడేకకం సహవో నచేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్య సన్మనసాహితః అయాసర హవ్యమోహితే జానో దేహి మహేషడగ్గు స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమదేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసమిత ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుమ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవణనాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమదేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసమిత ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాగశ్చిత్తార్థమతో దేవాదిశత్మైష్టమహోమం కరిష్యే ఓం అదితేన మన్యస్వ అనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుమ ఓం అతో దేవా అవంతనోయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధేపదం సమూఢమస్యవాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతిగతో ప్రధాని పస్పశే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం
तदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजा कृपाकं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अधिरेन्ममक्स्ताः अनमरेन्ममक्स्ताः सरस्वरेन्ममक्स्ताः देवसमिदप्रासाभिः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणे उपासनाग्नो कर्मसात् पुण्यार्थं उपरिष्टादन्त होमं करिष्ये ॐ मदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुभा ॐ यतस्य कर्मणोत्तरेरजं यत्पाण्योनमहाकरम् अग्निश्चस्विष्टकृतित्वान् सर्वकुस्विष्टकं जुहुरं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुरहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्त्वनदाः आर्जातवेदावचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात्रेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायवञ्चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषरन्दृष्टि स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितिसितेजोषितेजो मयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा इदन्ति सप्तयो नीरापरत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधि वनस्पतिकं धर्माप्तरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदज्जैनं द्यौर्जैनं पृथिवी जैर्नं वोषधि वनस्पतिकं धर्माप्तरसश्चैव जैर्नं समन्दाम्बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कान् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिकं धर्माप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपितामह प्रपितामह साक्षियमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममक्स्ताः अनमरेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसविदप्रासाभिः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रमे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्ठो क्रम्वचो अपापधीन् त्वेषं वचो अपापधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं न यदम्माजीक्वरदमत्र मेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुपद वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूह्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदगिस्तिरिवं गच्छतितो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निवार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रयाजिनं जमदग्ने दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषाम् आबोहिष्टामयो भवस्थानपूर्चेतधातन महेरणाय दिक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः वशतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्यक्षया जन्मनः आपो जनयधा जनः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनाय कृतन्तमया देव परिपूर्णन्तरस्तुने प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाजामनसीन्द्रियैर्मापत्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि इत्यस्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः
सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः गिरासुकं गिरास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च கோவிந்த திருமலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதல், பூர்ணாகுதியை சேவித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே அந்த தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். எதனால் இப்படி செய்கிறார்கள் என்றால், அந்த வட்டபத்திர சாயி என்னும் பகவானை திருமணம் செய்து கொண்டதாக கனவு கண்டு தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் அந்த விற்த்தாந்தங்களை கூறிக்கொண்டே அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். அடுத்ததாக மாலா பரிவர்த்தனம். திருமலையப்பனுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் அந்த மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்யப்படுவதே மாலா பரிவர்த்தனம். புஷ்பங்களை நாம் கைகளில் வைத்துக்கொண்டு பகவானிடம் நம்முடைய கோரிக்கையை சமர்ப்பித்தால் அந்த புஷ்பங்களை ஸ்வீகரித்து நம்முடைய கோரிக்கைகளை பகவான் நமக்கு அருளிச் செய்வானாம், அதாவது முழுதச் செய்வான். இப்படி திருமலை அப்பனுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அடுத்து ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவித்த மாலை திரும்பவும் கொண்டு சென்று பகவானுக்கு அணிவிக்கிறார். ஏடு கொண்டல்வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து பெருமாளுக்கு அணிவித்த மாலை திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கப்படுகிறது. தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பூமி பிராட்டி மாலையை அணிந்து கொண்டு திரும்பவும் பெருமாளுக்கே அனுப்புகிறாள். சப்தகிரிவாசா ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இப்படி 3 முறை அந்த மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. பக்தர்களே, நேரடி ஒளிபரப்பிலும் தொலைக்காட்சி மூலம் சேவிக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டி சேவித்துக் கொள்ளலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தராரமண கோவிந்தா 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 என்று இதோ அந்த அக்ஷதையை மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ